Good morning. So, without further ado, I think we should start the session. So, I want you all to stay focused because a lot of things that you just heard. And before we start the session, I want you to know that if you guys want to leave, you guys can leave after 6 lines. But after that, I would request you all to stay over here. Okay? So, a very warm welcome to Roots International Schools. My name is Zair Harshmi and I work at Department of Global Reach and I am your career counselor here. Okay? So, am I audible to you guys? पीछे आवाज आ रही है? Okay. So, हम start करते हैं with a school time story. It's high time. You guys are grown up now. There is no need for you to guys have bedtime story. So we are going to start with the school time story. So I want you all to wake up and a very good morning to all of you. So I am going to start off by sharing the story of a student whose most dominant emotion is fear. ठीक है? हम सब की लाइफ में कोई ना कोई डोमिनेंट इमोशन होता है. I want you all to just imagine that. You don't need to say it out loud, but I'm going to share the story of a student and you guys need to relate that with all of you. ठीक है? So she has a fear, but a fear of what? वो मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर बताता हूँ. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बिकॉज ऑफ दैट शी नोज व्हाट अ होपलेसनेस मीन्स. ठीक है? और ये पूरी स्टोरी के बाद आपको मैं बताऊंगा हाउ वो क्या चीज ऐसे करती है जिसकी वजह से शी बिकम्स फियरलेस. ठीक है? So she has a fear of rejection. Anybody who doesn't know what a fear of rejection is must know कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है. And even society, when you guys grow up, you guys feel the need to be accepted in society. कि मैं ये काम करूँगा तो accept होऊंगा, ये काम करूँगा तो accept नहीं होऊंगा. ठीक है? ये feel you want to know that this particular kid is very excellent in studies because she has a fear of rejection. Can anybody know why? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर आ रही है वो ये है कि उसको fear of rejection इसलिए है कि जो कि मैंने एस्टैब्लिश कर दिया ये बात कि अगर वो एक्सेल नहीं करेगी किसी भी चीज में, लाइफ में बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं आपके, स्टडीज है, सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, सो वो शी वुड बी रिजेक्टेड. तो होता ही है कि शी बिकम्स एन ओबीडिएंट in every single department. So now she is excelling in studies. She is doing everything that she wants. ठीक है? But still she is not happy. She is not satisfied. ठीक है? And she, despite all of these things, she is a kind of kid that gets overlooked. And if that student is absent in the class, her absence goes unnoticed. So आप लोगों की क्लास में भी या आप होंगे या आप किसी न किसी को जानते होंगे जो कि अगर एब्सेंट है आपको नहीं पता चलेगा. ठीक है? So I want you all to note all of these things very carefully because ये जाके ये आज का सेशन जो है आपकी अगले 2 साल को डिफाइन करेगा कि आपने अगले 2 साल में क्या काम करना है. ठीक है? तो होता यह है कि उसकी लाइफ में एक जीसी होता है. ठीक है? कोई मुझे बता सकता है कि जीसी किसकी एब्रिविएशन हो सकती है? अगले 5 सेकंड में जो बताएगा उसको पेन ले लेगा. सॉरी, गलत. जीसी आपने आज की सेशन में एक चीज जो सीख के जानी है यार, आई वांट यू प्लीज फोकस. ठीक है? अगर बात करनी है कैसे फ्री टू. अच्छा, जीसी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. वो बेशक स्टडीज है, अगर स्टडीज नहीं आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी ग्रोथ है, जो भी है. ठीक है? जीसी की एब्रिविएशन है गेम चेंजर. ठीक है? आपने अपने दिमाग में इसको बहुत अच्छी तरीके से इंग्रेव करना है कि व्हाट्स अ गेम चेंजर. तो गेम चेंजर हर बच्चे के लिए डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है. आपके 2 दोस्त हैं और साथ में आप 3 लोगों का ग्रुप है. यू गाइज आर एक्सीलेंट इन स्टडीज, लेट्स से. तो बट सिचुएशन ये होती है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं जो कि पर्सनल लाइफ में हो रही होती हैं, स्कूल में
में आप लोग इकट्ठे हो, बट सिचुएशन ये होती है कि जिस तरह आप आगे जाते हो पर्सनल लाइफ में चीजें वेरी कर सकती है, ठीक है। सो हर बंदे की लाइफ में गेम चेंजर डिफरेंट होता है। अब होता ही है कि वो जो स्टूडेंट है जो कि जिसको फियर है रिजेक्शन का, उसको लगता है कि अगर इफ शी इज गोइंग टू बी हरसेल्फ सो शी इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, सो वो क्या करती है, वो सब वो काम करती है जो जिसकी वजह से सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। बट होता ही है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको एक ऐसे कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं हु एक्चुअली बिलीव्स इन हर, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि विल मेक फन ऑफ यू कि यार यू पार्टिसिपेटेड इन समथिंग यू फेल्ड, ठीक। उसकी वजह से होगा क्या, आपकी जो मोटिवेशन होती है, जो करेज होती है, वो सबकॉन्शियसली ड्रैग डाउन करना स्टार्ट हो जाती है। सो यू रियली नीड समवन इन योर लाइफ टू पुश यू, टू मोटिवेट यू, ठीक है, टू फील दैट यू बी योरसेल्फ व्हेन यू आर अराउंड देम। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, मोर इम्पोर्टेंटली आपका मेंटोर हो सकता है, ठीक है। तो वो गेम चेंजर जो होता है दैट बेसिकली लीड्स, उसकी लाइफ में चेंजेस आती है एंड शी बिकम्स अ लीडर। यार प्लीज फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, so when she becomes a leader, she becomes a leader by overcoming all of her limitations, because उसकी लाइफ में जो गेम चेंजर हुआ होता है वो गेम चेंजर बेसिकली उसको एक नया पर्सपेक्टिव देता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू कैन लर्न जो कि आपको एवेन्यूज देंगे, ये चीज भी होती है, अच्छा ये चीज भी होती है, ठीक है। सो आपको उस एक गेम चेंजर को ढूंढना है इन 2 सालों में, ठीक है। That can be anything that is not specific to just your studies, because I am not your teacher, I'm your counselor. I'm going to tell you what are the things that actually going to make a difference in your life, ठीक है। So हम आगे चलते हैं towards something bigger. So I'm going to give you a full of thought. ये slide में I'm going to tell you what we are going to discuss in this session. So हम start करेंगे failure से कि failure क्या होता है, ठीक है। I'm going to tell you how to deal with that failure, because हम लोगों को लगता है कि यार हमारे अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, या हम किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, या if we don't have a sporty outlook, तो उसकी वजह से होगा ये कि we are not going to excel in our life, ठीक है। तो ये fears होते हैं हम लोगों को जो कि हमें पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं, और हमें ये लगता है कि हम अगर पार्टिसिपेट करेंगे फेल होंगे तो it's going to be a disaster in our life, which is, and if you think something like that, you are entirely doing something absolutely wrong. So I'm going to tell you how to deal with that, get motivation from failure. हमें क्यों ऐसा लगता है, या why am I telling you कि आपकी लाइफ में फेलियर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और आप लाइफ में उसको ऐसे ले सकते हो कि फेलियर से मोटिवेशन मिलेगी। You participate in something, you try to do something, you fail. तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं ये काम नहीं कर सका या नहीं कर सकी, आपने ये सोचना है कि आई नो वन मोर स्टेप दैट डजंट वर्क, मुझे एक और तरीका ऐसा पता है जो कि काम नहीं करता। सो यू आर बेसिकली गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे टेलिंग अबाउट सेल्फ अवेयरनेस इज व्हाट आर स्मार्ट गोल्स, कि हम ये सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है, हमें क्यों चाहिए, इज दैट इवन अ थिंग और नॉट, ठीक है। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू चूज योर करियर, बिकॉज ये बड़ा इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो हम आज के सेशन में ये चीज एस्टेब्लिश करेंगे कि हम लोगों ने अगले 2 साल गुजारने कैसे, ठीक है। आई एम नॉट गोना आस्क यू कि आप मुझे असाइनमेंट सबमिट कराएं, आई एम नॉट गोना आस्क यू कि आपने ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। आई एम गोना टेल यू कि आप ये काम करें, नहीं करेंगे तो इट्स इंटायरली योर चॉइस, करेंगे तो बाय द टाइम 2 years have gone, सेम डे 2022 में हम जब यहाँ पर मिलेंगे, so you guys are going to be the one who would tell me कि sir it actually made a difference, ठीक है। So it's entirely up to you guys. I'm going to tell you that कि नॉन एकेडमिक प्रोफाइल क्या होती है, ठीक है। नॉन एकेडमिक प्रोफाइल क्या जरूरी है, हमें क्यों नॉन एकेडमिक प्रोफाइल के लिए परसू कराने के लिए कहा जाता है, क्यों बोला जाता है कि हमने नॉन एकेडमिक प्रोफाइल के ऊपर तवज्जो देनी है, हालांकि हम स्कूल्स में हैं। तो कन्वेंशनल डेफिनेशन तो ये होनी चाहिए स्कूल की कि हम आने क्लासेस लेनी है एंड वी गो बैक टू स्कूल, वी गो बैक टू आवर, ठीक है। बट दैट्स नॉट द रियलिटी, ठीक है। आप
क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, ये पढ़ती हूँ, उसके बाद आप बताओगे मेरे हॉबीज। When your school doesn't define you, why would a university accept you if you are only going to tell that आपके बहुत अच्छे grades आए हैं तो मुझे accept करें, ठीक है? Universities nowadays wants to see an individual that you are, और वो एक नॉन एकेडमिक प्रोफाइल जो कि मैं बताऊंगा सैड है। आपके समर स्कूल्स और मॉडल यूनाइटेड नेशंस हैं, वेरियस वर्कशॉप्स हैं, आप पार्टिसिपेट करते हो, इंटर्नशिप्स एंड कॉम्पिटिशन, ये सारी चीजें कलेक्टिवली आपको एक इंडिविजुअल एक बनाती है जो कि एक यूनिवर्सिटी को चाहिए, ठीक है? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू आस्क यू, एंड by the time you go into second year, you guys would be so busy and so loaded with your academic activities that you guys won't have time for these things, ठीक है, training workshops and all. So I want you all to focus on आपने year 1 में क्या करना है, year 2 में क्या करना है, ठीक है? हम आगे चलते हैं कि ये सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? Is there anything you want in return? अगले 10 सेकंड है आपके पास, अगर कुछ बताना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको आज के सेशन से? Why you guys are so blank? आप मुझे बता सकते हो, आप जो बातें कर रहे थे बिल्कुल लास्ट में, क्या चाहिए आपको इस सेशन से? हाँ, so आप मुझे बता सकते हो कि why are you here? ठीक है, और क्या चाहिए ये तो मैं बता दूंगा। Is there anything you want besides that? देखो मैसेज तो आपको मिल जाएगा। हाँ, अच्छा यार, आप लोगों की बड़ी लो एक्सपेक्टेशंस है, चलो अच्छा है, it's going to turn out in a good way. So besides you're going to get the message that what you're going to do in life, आपको आज ये चीजें जीतने का मौका मिलेगा। So it can turn out into a prize competition as well. So सबसे पहले I'm gonna give one चॉकलेट, वो एक चॉकलेट होगी जो कि सिर्फ उसको मिलेगी जो लीडरशिप एबिलिटीज क्वालिटी शो करता है, ठीक है? सो यू आर गोइंग टू गेट अ लाइफ चेंजिंग बुक दैट आई एम प्रीटी श्योर आप उसको पढ़ोगे, योर लाइफ विल टेक 180 डिग्री। उसके बाद एक अच्छी चीज जो है आप लोगों की आप लोगों के लिए वो ये है कि यू गाइस आर गोइंग टू गेट की सर्टिफिकेट्स दैट विल गिव you a boost that you guys actually did something, ठीक है? So that is basically my thank you to all of you कि you guys took some time out and all the effort goes to your coordinators, Ma'am Sada and Ma'am Saira, you know, जो लोग आपको यहाँ पर लेकर आए जिनके साथ आप डेली बेसिस के ऊपर इंटरेक्ट करते, ठीक है? One of you is going to get champion's title, that will be a champion among all of you, उसको ये टाइटल मिलेगा। And I can assure you one thing, this is going to be fun and memorable time for all of you. But only if you guys would pay attention. अगर attention pay नहीं करोगे, this is going to be super torturous, super boring, and just an ordinary lecture जिसके लिए आप आते हो, बैठते हो, time spend करते हो, चले जाओ. You get nothing in return. So it's entirely up to you guys. You guys want to leave, you are free to leave. I'm not gonna tell you कि आप यहाँ पर रुके, अभी आप जा सकते हैं बिकॉज और मेरे साथ क्या करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? सो हम स्टार्ट करें आज के सेशन। कोई जाना तो नहीं चाह रहा? सो रहे हो क्या? कोई जाना तो नहीं चाह रहा? बाकी जाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं बोलते? मैं आज की वन लास्ट टाइम, कोई जाना तो नहीं चाह रहा? अच्छा चलो, let's move forward to failure. we started off कि failure life में कितना जरूरी है, ठीक है? So I'm going to start by the first point, which goes that the purpose of failure is to motivate you to do something different, to make your dream happen. You need to find the lesson. What does it mean? It means that आपके फेलियर का पर्पस ये होना चाहिए कि आपने लाइफ में कुछ सीखना है। The thing that I already have established कि आप लाइफ में आपको जितने भी फेलियर्स आएंगे, आपने कुछ ट्राई किया और आपको फेलियर मिला उसकी वजह से, बट आपने ये किया कि उससे सबक हासिल किया। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, बिल्कुल जो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो क्रॉल करना स्टार्ट करता है और क्रॉल करने के बाद he or she takes
भागने लगता है, मैराथन में भागने लगता है एकदम? हाँ, नहीं ना। तो वो क्या करता है, 2 स्टेप्स लेकर गिर जाता है, 3 स्टेप्स लेकर गिर जाता है। सिमिलरली आप देखते हो, अगर आपके पास बहुत टाइम है, मेरे पास क्योंकि था जब मैं आई वाज ऑफ योर एज, तो when an ant used to pass, तो एक चींटी गुजर रही होती थी, तो मेरा ख्याल से सबने किया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, वो ब्लॉकर्स करते हैं, हम देखते हैं कि क्या करती है, ऊपर से चढ़ के जाती है, साइडवेज ले लेती है। तो आप जितना मर्जी आप उसको रोकिए, उसने अगर एक जगह, ठीक है, द सेम वे एक छोटा सा बच्चा है जो अभी क्रॉल कर रहा है, बट उसको चलना स्टार्ट करना है, वो अगर ये सोचेगा कि 4 लोग देख रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि यार मैं तो लाइफ में चल नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, तो वो चलना कैसे स्टार्ट करेगा? जब चलना नहीं स्टार्ट करेगा तो भागेगा कैसे, पार्टिसिपेट कैसे करेगा 100 मीटर रेस में अगर बड़ा होगा तो? So I want you to know this thing and clear in your mind that the अगर आप फेल होते हो तो that's always consider this thing congratulations from my side, because आप you actually take a step to improve yourself, ठीक है? आप फेल होते हो और आपका एक दोस्त है जो कि आपको बोलता है कि यार ठीक है, you are at least better than that, because वो सिर्फ बातें कर रहा है and you try to take some action, ठीक है? So always find the lesson from your failure. Second step है, if you want to step into your dream life, that requires you to be brave. Now I want you all to focus on me कि अगर आपने, if you want to step into your dream life, you have to step out of your comfort zone. अब suppose करो ये podium है, that's my comfort zone, मैं यहाँ पर भी खड़ा हूँ, ठीक है? So the moment I step out of the comfort zone, ठीक है, I step into my dream life. It's that easy. But अगर मैं ये सोचता रहूँगा कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा तो मैं अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर सकूंगा, अच्छा कंपीट नहीं कर पाऊंगा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ये सोच के आप पोडियम पे रहते हो, कंफर्ट जोन पे रहते हो, so it's not gonna take you anywhere. मैंने अगर बाहर जाना है, ऑफिस में बैठना है, so I need to get out of this podium, walk the path, go to my office. Same is the way for your life, the 2 years that you can spend, ठीक है? एक important चीज, और I want you to take be very attentive while discussing that, because this is going to lead you somewhere. Your dream has to be so powerful that you dismiss your fears of revealing yourself and being ridiculed and embarrassed if you fail. ये वाली बात जो मैंने आपको इनिशियली बताई है कि आपको अगर आपका एक ड्रीम है, ठीक है, you want to be an architectural engineer, ठीक, लोग आपको रोकेंगे कि ये नहीं करो, but if it's your dream, you need to be very strong enough, you need to be so powerful, very powerful, कि आपको वो लोग जो भी बातें कर रहे हैं, they are not affecting you. वो लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, you are not getting those things, those talks affect you or affect the way you are going to be, ठीक है? So आपको ये चीज मैंने एस्टैब्लिश कर ली है, लोग रिडिक्यूल करेंगे, आप एम्बैरेस हो गए, अभी हो गए आप एम्बैरेस, ठीक है? जब आपको बुलाऊंगा, so this is your test and I'm going to tell you how to deal with that. सबसे important चीज, आज जो एंड तक ये सेशन सुन लेगा, I can assure you one thing, अगर सीरियस होके इसको सुनोगे, it's going to be GC for you, game changer for you, ठीक है? So failure always remember, it's only a matter of time, but failure will always lead to success, because every time you are failing, you are going to know one more step that doesn't work, ठीक है? आपके पास एक डेटाबेस बनेगा कि ये नहीं as compared to a person जो कहता है हाँ you fail कर रहा है, ठीक है? So time for the first activity, leaders chocolate. So what you have to do is it's as simple as it says. You need to have it, eat it, and enjoy it. ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो पहली एक्टिविटी हमारी हो रही है, वो उसका वही प्राइस है लीडर्स चॉकलेट, बट वो मिलेगी कैसे? ठीक है? I have this chocolate right here. ये मैंने वेट करके रखा हुआ है. तो आप लोगों में से who has the guts to come over here, take it, eat it, and enjoy it. But catch here, I'm going to ask you a simple question and you'll have to answer it over here.
ठीक है, and that's going to define who leader is. And I'm gonna ask you again and again, till somebody comes up here. So who has the more courage to come over here and lead it? सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. Who has the guts to come here, take this chocolate from my hand and eat it? Open it. Jaldi, jaldi, jaldi. We are running short of time. Eat it. Come on. We are running short of time. So now I want you to focus on the screen. Come over here and say out loud in the mic the questions that I'm gonna ask. आप सामने देखो, read out the question and answer it. I did. Read the question. Then just take your brush and deep it. I did not. You did? I did not. You okay? You guys, I want you all to at least give him applause for a couple of things. Firstly, just stand there for a while. सबसे पहले you guys need to applaud him one more time for the honesty that he said that he did not because he was running away. सबसे अच्छी क्वालिटी लीडर की जो है वो यही है. No matter things get difficult. हमारी सोसाइटी का, हमारी जनरेशन का, आपकी जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि when you get into a difficult situation, you find the easy way out, and the easy way out most of the time is to die. ठीक है? You can get out of that situation temporarily, but things will come back some other time and come back hard. Here you, in order to hide it, you lie again, and you will keep on lying, unless there comes a time where you will break down. Right? So I want you all to know one thing, because he hesitated for a while as well. To be honest about every single thing that happens in your life, because that's what. ठीक है? Secondly, leader की सबसे important चीज ये है, उसके पास कोई opportunity आती है, उसके पास कोई initiative आता है, वो देखता है, तो वो सबसे पहले भागता है उसको grab करने के लिए. So I want you all to be the leader in your life whenever you get the opportunity. अब आप लोग मेरा ख्याल से 40-50 लोग बैठे हुए हो, सबका दिल कर रहा होगा कि यार चॉकलेट मेरे पास छोड़ के आता है, ठीक है, पर चॉकलेट नहीं है, ठीक है. उसकी रीजन ये थी कि you need to get the opportunity. Opportunity is not going to come to you to tell you that explore me, ठीक है. So you need to be very vigilant and take initiative, and that's what will make you a leader. ठीक है? आपका नाम? ठीक है? One more applause for Heather. So moving on, we are going to discuss. अभी आपने इतनी अच्छी बातें सुनी है, तो tell me, are you smart? ऊंचा बोलो, मुझे नहीं आवाज आ रही. You should be. Yes. So सबसे बड़ा जो yes बोलेगा उसके लिए एक सवाल है. क्या हो? सवाल सुन के क्यों घबरा क्यों जाते हो? बोलो, ऊंचा बोलो. Yes. ठीक है. So सवाल आपके सामने है. Are you smart? How? ऊपर बताओ क्या नाम है आपका और यहाँ पर हाँ, ये यहाँ पर बोल रहे हैं it's an activity to make you a leader, to make you a champion, so we are gonna do that. ऊंचा बोलो. It's an activity that make you a leader. अपना नाम. My name is Ramesh. And why do you think you are smart? Because स्मार्टनेस जरूरी नहीं कि जो बंदा लाइफ होगा सिर्फ वही स्मार्ट होता है. सर लाइफ में बड़ी ओके ऐसा आदमी बंदे को होना पड़ता है.
रहे हो क्या हो रहा है अभी? दोबारा बोलो, दोबारा. And I want you to keep focus on deep level here. Level है. Why you should be smart? जिंदगी में कई ऐसे मसले आ जाते हैं कि बंदे को अपने मतलब इमोशंस को कंट्रोल करके कई काम करने पड़ते हैं. जरूरी नहीं है हर जगह बंदा या तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाए या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए. एक तो बोलो बोलो राज. इतना ही ठीक है. I want you आपका नाम क्या है? रामेश. ठीक है. एक बार standing ovation for Ramesh for coming over here. And when you were doing that, when you were telling, so yes, इसके ऊपर आ रहा था लोल. ये लोल क्या होता है? ठीक है. I want you to know that life में जो चीज apparently दिख रही है, ऐसे होगी नहीं हमेशा. So this is not laugh out loudly. This is ये तो बहुत वायरल हुई है ना गूगल पे, इसलिए पता है. There are so many other meanings for a particular word. I'm going to tell you. Don't worry about that. आपने लाइफ में चीज जो आपको करेंटली दिख रही है वो वैसे नहीं होगी. ठीक है. So you don't have to take things for granted. That's lesson number 2. ठीक है. So smart. I want you to live in your brain that you have to fall in love with smart goals. So there is a time for everything, but for now I want you to fall in love with smart goals. Okay? So smart is basically abbreviation of SMART. So S stands for specific. ये वाली जो स्लाइड है आप लोगों ने इस चीज को अगर if you have pen or paper or if you want to record this thing, I want you to please record this slide or write it down somewhere, and I want you to focus on like more steadily. ठीक है. बट रिकॉर्ड करने के या लिखने के चक्कर में आप लोगों ने मेन क्रक्स नहीं भूल करना कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट. ठीक है. खैर एनीवेज फोकस ओवर हियर. स्मार्ट इज स्मार्ट एस जो है यहाँ पर एस इज स्पेसिफिक व्हिच इज बेसिकली यू नीड टू सेट रियल नंबर्स विद रियल डेडलाइंस. आप फॉर एग्जांपल हम कोई यही बड़ी बैठे हुए ऊंचा बोला पीछे करके कि लेट्स से आपका एक गोल है. जस्ट टेल मी व्हाट योर गोल इज. दैट कैन बी एनीथिंग. चलो अच्छा इंसान बनना है. बड़ा एब्स्ट्रैक्ट गोल है जो कि होना चाहिए, बट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लाइफ में अच्छा इंसान बनना है. रामेश नाम है वो कैसे होगा? तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे थ्रू स्मार्ट गोल्स. ठीक है. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. सेट रियल नंबर्स विद रियल डेडलाइंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? रामेश के लिए कुछ अलग चीजें होंगी. ठीक है. कि आप इन लोगों के काम आना है. ठीक है. आपने ये कहना बस अच्छा इंसान बनना है. आप कैसे बनना है? यू नीड टू सॉर्ट 3-4 थिंग्स कि आपने लाइफ में ये काम करोगे. यू फॉर एग्जांपल आप लाइफ में ये डिफाइन कर लेते हो कि आपको कोई भी ऐसा शख्स मिलेगा जिसको भूख लगी हुई है. सो लेट्स से आपने अच्छा इंसान बनना है. आपने माइंड में फाइनलाइज कर लिया कि अगर आप if you are going to have lunch at that time and somebody comes in, you are going to offer that lunch to that person. ठीक है. बेशक उसको भूख लगी है नहीं लगी. तो इस तरह का आप टू डू लिस्ट एक सॉर्ट ऑफ बनाओगे 4, 5, 10. ठीक है. ऐसे नहीं होगा कि बस लाइफ में अच्छा इंसान बनना है और आप लोग ये फाइनलाइज कर रहे हो और बैठे हुए हो कि हाँ ठीक है अब अच्छा इंसान बन. ठीक है. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए. ठीक है. मेजरेबल का मतलब है कि आपने उसको ट्रैक करना है. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बंदा आ रहा है. ठीक है. आपने एक महीने में 30 गेस्ट आपके पास आए हैं जिनको आप खाना ऑफर कर सकते थे, बट आपने 20 को किया. ठीक है. सो यू नीड परसेंटेज ऑफ हाउ क्लोज यू आर टू द गोल. इसको मेजर करना है. वो कोई भी है. आपने अगर बाहर के लिए अप्लाई करना है तो आपने सेट करना है गोल कि वो स्पेसिफिक है. यूएस जाना चाह रहे हो, यूके जाना चाह रहे हो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे दैट्स मेजरेबल. ठीक है. उसके बाद आता है अटेनेबल. यू डोंट हैव टू वर्क टुवर्ड्स गोल अचीव इट इन वन टाइम. एक दिन में कुछ भी नहीं होता. मैं रामेश को बोलूँ अच्छा इंसान बनना है. रामेश स्मार्ट गोल के ऊपर एम करे. कल पता चले रामेश आ रहा है और उसके पीछे से लाइट निकल रही है और अच्छा इंसान बन गया. ठीक है. सो इट टेक्स टाइम. इट टेक्स पेशेंस.
requires patience to attain your goal. ठीक है, उसके बाद realistic, he has to and he has to promise, for example, in this case में honest about yourself and about your capability and about the hurdles you may have to overcome. For example, अब रामेश डिसाइड करता है कि स्कूल से निकल के वो 400 लोगों को खाना खिलाएगा, ठीक है, बट जब देखता है तो वो 2 लोगों को खिला सकता है या 10 लोगों को खिला सकता है, ठीक है, तो वो कहता है नहीं मैंने खिलाना है, so वो so I want you all to know this point that you need to be very realistic that are you going to achieve this goal or not, as simple as that, very plain. और अचीव करने के लिए वो कुछ भी हो सकती है, अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जैसे आ रही हैं कि यार मैंने बाहर अप्लाई करना है, सेट देना है, बट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई डोंट वांट टू आस्क मनी फ्रॉम पेरेंट्स, मुझे खुद से करना है, तो आप उसको ओवरकम नहीं करोगे, आप उसको अवॉइड नहीं करोगे, ठीक है, उसको लेकर आओगे अपना प्लान बनाने के अंदर कि आपने किस तरह हर्डल्स को क्रॉस करना है, ठीक है। बड़ी क्लियर एग्जांपल, जब भी आप वॉक करते हो तो आप फॉर एग्जांपल मैंने आपकी छोटी सी बताई वो ऑन करी कि अगर आप ब्लॉकर रखते हो तो वो दूसरी साइड से चले जाती है, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द हर्डल्स, यू नीड टू मेक अ प्लान बी कि अगर ये हर्डल आ गई तो इसको ओवरकम कैसे करना है, ठीक है, दैट्स आर एंड सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड, ठीक है। रामेश मुझे कह देता है कि सर मैंने अच्छा इंसान बनना है, और वो मैं कहता हूँ कब बनोगे, ठीक है, कहेगा बस मरने से पहले बन जाओ तो ठीक है, ऐसे नहीं होगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि फॉर एग्जांपल मैंने अब क्योंकि उसने नेक्स्ट कर लिया कि मैंने ये 10 काम करने हैं, उसको उन 10 कामों को मेजर कर लिया कि किस तरीके से करने हैं, और ये देख लिया अच्छे तरीके से कि वो अटेन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं और वो रियलिस्टिक है या नहीं, सो उसको पूरा करने के लिए साल के अंदर करना है, मैं एक वॉलंटियर काम करना है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेना है ताकि मैं दूसरे काम की तरफ जा सकूं, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी टाइम बाउंड करना अपने आप को बहुत जरूरी इसलिए है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा 100 फोल्ड 200 फोल्ड इंक्रीज करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी को, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली यू विल लैग के यार आज जल्दी कर कल काम कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ और पूरा हफ्ता गुजर जाता है और काम ही नहीं होता, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर गोल्स दैट हैज सम डेडलाइंस दैट हैज सम लिमिटेशंस, ठीक है। अब आते हैं सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर और हम बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, ठीक है। सेल्फ अवेयर स्टूडेंट, आई जस्ट क्विकली गो थ्रू स्लाइड, these slides ताकि हम एंड कर सकें टाइम पे, सो सेल्फ अवेयर स्टूडेंट जो होता है दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ स्टूडेंट जो कि डिफाइन कर सकता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, ठीक है। आई वुड हैव कॉल्ड यू ओवर हियर बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अब ये हम फिर बाद में सेशन करेंगे, ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिकल करते हैं, सो आपको पता होना चाहिए, अब मैं आप एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप मेरे लिए करते हो, आप बता सकते हो इसमें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या, अच्छा, वीकनेस ये है कि हाइपर हो सकता हूँ और स्ट्रेंथ ये है कि मैं पेशेंट हूँ, तो पहली बार ये तो इंटरनेशनल चीज़ है, आप हाइपर और पेशेंट एक टाइम पे कैसे हो सकते हो, खैर पॉइंट ये यही उसका, अच्छा खैर पॉइंट ये कि आपको आप लोग जब घर जाओगे इस सेशन के बाद आपने एक पेज बनाना है, एक तरफ स्ट्रेंथ लिखनी है, एक तरफ वीकनेसेस लिखनी है, आपको जो लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है आपने स्ट्रेंथ में लिखना है, वीकनेस में वीकनेस लिखनी है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, आपने एक लीडर बनना है, चैंपियन बनना है, सबसे पहला स्टेप ये है यू शुड बी सेल्फ अवेयर, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या अच्छाई है, क्या खामी है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वो पॉइंट आउट आसानी से कर सकता है कि उसको लाइफ में या हर्डल्स या प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, सो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो रामेश के क्यों है ऐसा, यस नो नहीं कर सकते, तो आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने आइडेंटिफाई करने के क्यों कर सकते हो, जो भी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन आ रही है वो लिख लो, ठीक है, उसको फिर डायसेक्ट करेंगे कि कर सकते हैं नहीं, जो सेल्फ अवेयर स्टूडेंट होता है वो एक पर्टिकुलर सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स, क्योंकि उसको माइंड में पता है कि क्या करना है उसको, ठीक है, वो डिल्यूशनल जरूर हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट जरूर हो सकता है, बट एटलीस्ट क्या है उसको पता है, इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट जिसको पता ही नहीं है कि इसको लाइफ में क्या करना है, ठीक है, so that particular person is at least a step ahead if you don't know कि आप
ने आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करनी है या किसी ने अच्छा इंसान बनना है, अब अच्छा इंसान बनना है तो सोशल एडवोकेसी भी कर सकता है, वॉलंटियर काम भी कर सकता है, एनजीओ भी ओपन कर सकता है। ठीक है, पता चले रामेश को मैं 10-15 साल के बाद मिल रहा हूँ और रामेश जो है ना कहीं पर टेलीनॉर में काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अच्छा इंसान बनने के लिए। ठीक है, खैर एनीवेज मूविंग ऑन, द इम्पोर्टेंट पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू का नाम सबने सुना है? हाँ हाँ, आईक्यू का नाम सबने सुना है। आईक्यू इज नॉट अ हॉट टॉपिक राइट नाउ। ठीक है, अगर आपका आईक्यू लो है आप चल जाओगे, बट आपका अगर ईक्यू लो है विच इज इमोशनल क्वोशिएंट, ठीक है, वो बेसिकली बताता है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, और वो इमोशनली स्ट्रांग आप तभी हो सकते हो जब आप अपने आप को डिफाइन कर सको, अपनी हर्डल्स के बारे में बता सको और आप बता सको कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। सो आई वांट यू टू पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड, लर्न व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप लोग चाहोगे तो एक सेपरेट सेशन हम इसके ऊपर कर लेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ओनली इफ यू गाइस आर। ठीक है, तो आप हम बेसिकली कॉमन सेंस गुरु आप में से वो होगा तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछने वाला कौन होगा जिसको कॉमन सेंस आती है। ठीक है, सो आई वांट at least 2-3 people who are going to volunteer to come up over here and answer some questions और at the end of the day उसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पे मेंशन होगा कि इज अ कॉमन सेंस गुरु। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकंड है ऊपर आने के लिए, कोई नहीं आएगा तो 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो जल्दी आ जाओ यहाँ पे जा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? अब आपने क्या करना है, आपने इसकी तरफ देखना है और सवाल के जवाब देने हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो हिंट आपके लिए ये है कि ये जो सवाल पूछे जाएंगे ये सेपरेट क्वेश्चन। ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन हैं और चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन आंसर करेगा? आप आंसर करोगे? ठीक है, हम ऐसे करते हैं 4 क्वेश्चन है, सबने आंसर देना है माइक में आके। ठीक है, फिर वापस पीछे चले जाना है और हम देखते हैं क्या सवाल है। आपके पास 4 से 5 सेकंड है जवाब देने के लिए, अगर 5 से ज्यादा होंगे तो आप एक्सक्लूड आउट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू पुट अ जिराफ इनटू अ रेफ्रिजरेटर? 3 2 1 नेक्स्ट। आंसर देना है मुझे, आई डोंट वांट एक्सप्लेनेशन। 4 3 2 1। Okay, one answer. Second question, how do you put an elephant into a fridge? अब आप लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा because you guys didn't have the guts to come over here. Let them participate. उत्तर बताने दूसरा बोलो। अच्छा, ये सेपरेट क्वेश्चंस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सोच समझ के जवाब देना। आगे ओके ओके We don't like if you put it in that also appreciate it won't survive. So like why do you need to put it in the first place? Okay. Next question. Prophet Hazrat Noah alayhi salam has to build another ark to collect single animals on the board. Hint is these are separate questions. I want you to know that. मैं end में answer बताऊंगा। अब करना ये है कि all animals, सारे के सारे animals आ गए हैं ark में except for one. Who that is? I'll start with you. What's your name? I'll start with you. You have 5 seconds to answer. Read it. आप मुझसे आकर read the question. आप बताओ. हाँ? Next. Date is these are separate questions. Okay. हाँ? A turtle. Okay. Why
100 questions. There is a river you must cross, however, the river is inhabited by crocodiles. How do you cross it without being killed? You cross it on a plane. You cross it on a Plane. next Boat. board. Bridge. Huh? Bridge. By bridge? Okay. Your turn. You don't have time for that. अच्छा, okay. यार अब आप जवाब सुन लो, जिसको क्यूरोसिटी थी, जिसको नहीं थी, वो भी सुन ले. अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम पार्टिसिपेशन लेते हैं, मैं सदा की थी, ठीक है? So I want you to answer all these questions one by one. How do you put a giraffe into a refrigerator? ठीक है? A round of applause for them Sada for participating. Okay. How do you put a giraffe into a refrigerator? Open the door of the refrigerator, put the giraffe inside, close the door. Okay. Who said that? आप इधर रखो. 1 point. आप दोनों इधर. Okay. How do you put an elephant into a fridge? Open the door, take out the giraffe, put the elephant inside, and close the door. ये किसने कहा था? और किसी ने तो नहीं कहा था. Third question. Prophet Noah has to build an ark to select single animals on the board. All animals are on the board, but except for the what? Elephant. Why? Elephant was in the refrigerator and the refrigerator was closed. So how he can come out? Okay. What's the answer? Fourth question. Very interesting answer. Can anybody guess the answer? Fourth. Huh? There is a river you must cross, or when the river is inhabited by crocodiles. How do you cross it without being scared? Just say it out loud. किसी को भी आता है. Crocodile birthday में क्या है? Crocodile है. अच्छा, और कोई कॉमन सेंस इसमें है बताना चाहेगा? What's the right answer? Crocodiles were on the ark. They were not in the So I guess students from here said it correctly. So congratulations, आपने थोड़ी सी common sense है. So आप में से 3 सवालों के जवाब आपने ठीक दिए, ठीक है? और एक के आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए? आपने एक ही दिया. This is for you. आपका क्या नाम है? Say it out in like mic. My name is Shehbaz Khan. So clapping for Shehbaz. Work using this pen on any screen that has touch system installed, which basically makes it very documented. Okay? So thank you so much. Once again, clapping guys to participate in this competition. अच्छा, important take home message क्या है इसमें? Take home message ये है, attentive guys. एक मैसेज इसमें से ये है कि ये जो पहला सवाल था ये बेसिकली चेक कर रहा है कि आप सिंपल थिंग्स को एक सिंपल सी चीज है आप सिंपल सा सवाल था आपने ये देखा कि एक्चुअली हम कैसे कर सकते हैं एक सवाल है आपने जवाब दे दें आपने काउंटर सवाल नहीं करते हैं ठीक है तो whether able to do things in a complicated way or not ठीक है so clapping for those who said it correctly second सवाल ये था how do you put an elephant into fridge this question basically tests your ability to think about repercussions of your actions ठीक है कि आपकी जो actions हैं उसकी बेसिस के ऊपर रिएक्शंस क्या आएंगे ठीक है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा सवाल बेसिकली इज गोइंग टू टेस्ट योर मेमोरी कि आपकी मेमोरी कितनी है ठीक है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं एंड देन फोर्थ इज टेस्ट whether you quickly learn from your mistakes or not ठीक है तो ये वाला सवाल आप में से किसी ने भी करेक्ट नहीं किया था ठीक है तो बेसिकली वो ये वाला कोर्स
किया वो दे are congratulations to them because they actually learn from their mistakes. ठीक है? Let's move quickly towards the end. How to choose your career? How to choose your career? सबसे important चीज ये है कि it's your life. You have to live it to the fullest. ठीक है? Nobody is going to tell you कि how you are going to but your own self, because nobody is going to be with you for for eternity. The only person that is going to be with you is your own self. Okay? So you need to give importance to your own self. You don't have to underestimate yourself. Okay? 6 ways हैं how to get your career. सबसे पहले you need to assess yourself. We are going to do separate sessions for all of these things. So I want you to assess your personality type because everyone has a different personality, and if you guys are going to focus on doing something that is contrary to your personality, you will be to ruin your life in longer run. ठीक है? सबसे important चीज explore. ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि क्या आप एक्टिविटी कर रहे हो और उसका क्या इफेक्ट होगा. क्योंकि हम मूव करते हैं ताकि हम सेशन थर्ड जो है कि आपने जो किसी को आपने उन लोगों से मिलना है जो ऑलरेडी ऑक्यूपेशन के अंदर काम कर रहे हैं ताकि आप उनसे लर्न कर सको. ठीक है? बड़ी सिंपल सी बात है. उसके बाद यू हैव टू मेक योर करियर चॉइस कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है. जब आप लोगों से इंट्रोड्यूस करोगे उन लोगों से मिलोगे कि आपको आइडिया होगा कि करना क्या है. ठीक है? आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं ठीक है. उसके बाद you need to identify CDA. Those of you who are social media freaks, they would know what CDA means. Call to action उसको बोलते हैं. So I want you to make CDA for your individual profile ताकि आप 2 साल के बाद जहाँ से निकलो तो कुछ कर सको. ठीक है? आपने वेट नहीं करना, यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके बाद बाहर जाना है, उसके बाद आप कुछ जिंदगी में करोगे. When actually time is now. Are you sure that you're going to survive that long? If you are not, then you need to take initiative right now, right this day, as soon as you need this session. ठीक है? हम important बात ये कि how good can you divide life. So हमारी जो डेली रूटीन है वो मेरी 4 से 5 कंपोनेंट्स के ऊपर होती है. You go to school. That basically occupies major portion, and then there is a portion that you don't have, and there is a portion that basically is deep, and there is again the GC, which is basically a game changer. ये game changer important इसलिए होता है आप इस टाइम के अंदर सोचते हो कि लाइफ में करना क्या है आपने. ठीक है? तो अगर इसको इंडिपेंडेंटली सोचोगे, अच्छा टाइम गुजारोगे, सोचोगे अच्छा इंसान रामेश की तरह बनना है आप सब लोगों ने, तो आप लाइफ में कुछ कर पाओगे. ये GC वाला जो टाइम है, अगर आप तो उन चीज़ों में गुजार दोगे तो अपेरेंटली इफेक्ट इसका नजर नहीं आएगा. बट आज से 4 साल के बाद जब रामेश से हम मिलते होंगे तो हम रामेश को रामेश जीसी करेंगे, रामेश गेम खेलते हैं. ठीक है? तो इसी तरह ये मेजर पोर्शन 55% इन योर एकेडमिक प्रोफाइल. दिस 35% इज बेसिकली नॉन एकेडमिक प्रोफाइल दैट इंक्लूड्स योर स्किल, programming, marketing, photo, video editing, anything that you can get, workshops, summer schools, and then this is personal essay. Personal essay is a game changer. I'm going to tell you why personal essay is game changer because even if you have not got good grades और आपकी co-curricular activities नहीं है, but आप अपने आप को explain बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से. हमारा 5th to 15 को personal essay के ऊपर हमारी workshop होगी for 8 students. If you guys are interested, you can come as well. Personal essay basically is a personal to you. It basically defines who you are. तो आपको अपनी स्टोरी बतानी है. You guys are living for a reason. अल्लाह ताला को आपकी जरूरत थी. So that's why you are living. So that's what makes you unique. So you need to work on your personal essay. और ये वाला टाइम जो 10% है, that is basically your social work, volunteer work, advocacy. जो कि रामेश मेरा ख्याल से इसका 55% गुजरेगा. ठीक है? आखिरी important पॉइंट ये है, मेरा ख्याल से इस चीज को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है. ठीक है? Okay, since we don't have time, so we are just gonna quickly go towards the final step, which is I just want it hardly 2 minutes
Okay, I just want 3 volunteers to come over here quickly. 3 volunteers. 3 volunteers. जल्दी बस ठीक है आ जाओ अब now what we will do is one person is gonna say it out loud that I am strong, the other person will start it आगे one person is going to say I am strong loudly, the other person is going to say studying his roots, that's you Rahul, the third person is will say I am more closer, and the fourth person will say the nature word. Okay, while you are going to say that, what we in the audience are going to do, I just need some feedback from you guys as well. You have to do 2 taps and claps just like this. ठीक है, are you guys ready for that? ठीक है, तो पहला सबसे पहले ठीक है सही है स्टार्ट कर लो सर हम सबसे पहले मैं बोलूंगा और फिर यू विल मेक इट दिस सीक्वेंस ठीक है सो आर यू गाइस रेडी ठीक है 3 2 1 स्टार्ट I am strong आप लोग भी स्टार्ट करें I am strong proper 2 taps and a clap ताकि हम सेशन रेडी कर सके 2 taps and a clap ठीक है चलो साथ स्टार्ट करो सारे I want you all to keep